Hello, good evening everybody. Welcome to my channel, The Invisible Trader. और हम रिव्यू कर रहे हैं दिस वीक का एंड नेक्स्ट वीक का एनालिसिस. सो दिस वीक हमने तो थर्सडे फ्राइडे कुछ वीडियो बनाया नहीं था बिकॉज थर्सडे एक्चुअली आई मीन वेडनेसडे एक्चुअली वी स्टार्टेड मेकिंग द लॉसेस ऑन आवर निफ्टी वाला ट्रेड राइट. एंड Thursday, we actually cut the position in losses. It was around 1 lakh plus. But Friday, then we again came back to buying. I myself, although I did not make any video, and try to cover the losses which I have made on Thursday, actually on the positional sell. Intraday was still doing good. If you have watched the video of Tuesday, Wednesday intraday was also very, very good. Even if market made a red candle, we captured the moves, right? The biggest loss was on Thursday and especially Nifty. Bank Nifty, we didn't have any losses because we actually opened the 18,300 straddle here, right? When Nifty was around 80, opened around 18,000, sorry, here. When Nifty was opening around, this is Tuesday, right? Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Yes. So we opened it here, which was a bigger loss. And if you look at all these falls till Thursday, I mean, it was still okay till I think Wednesday. Even till Wednesday, the premium that we have collected, it was in less than 40, 50 points losses. Even the market was fall like 400 points. That was the advantage of option selling. But we did not expect this Thursday fall to be happening like this. Actually, we expected at least a range bound market, or market would have been staying here closing. तब भी यहाँ पे हम लोग जीरो लॉस जीरो प्रॉफिट में निकल जाते हैं. बट ठीक है. वन ऑफ द रीजन आई विल टेल यू बिकॉज बीच में किसी ने एक बार कमेंट किया था ना, अगर आपका व्यू इतने अच्छे जाते तो आप तो पैसे बहुत बनाते होंगे. सो दिस वीक प्रोबेबली द आंसर टू दैट गाय हु asked it in the YouTube के व्यू सही होने के बाद भी हमारे पैसे आइडियली हर हफ्ते नहीं बनते हैं, एंड स्पेशली दिस वीक. And it's not like a big loss that we have made of 1 lakh in Nifty, and we recovered on Friday. Of course, if you look at on weekly basis, I didn't have like a red week. It's still a green week for me. But the way this happened, I was a little bit disappointed with myself. So I took a rest for 2 days for not making the videos, right? People might be thinking that कि सर के लॉस हो गया तो वीडियो नहीं बना रहे. मूड ऑफ था, ऑफ कोर्स, नॉट बिकॉज ऑफ द मनी, बिकॉज पहले भी मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया है जहां पे 3 लाख 4 लाख 5 लाख के आसपास लॉस इन अ डे. इंट्राडे आई एम टॉकिंग अबाउट, फॉरगेट अबाउट पोजिशनल, राइट? माय क्वांटिटी साइज इज दैट बिग. बट ये 1 लाख का लॉस कोई मायने नहीं रखता. बट द वे वी took the action, even if the view was so clear after Monday, the action we took, I was a little bit disappointed with that, especially with Bank Nifty. So if you look at in Bank Nifty, what I told is Monday we had a level around this, right? 38,900, which is this one, highest one. Yeah. I said अगर Monday market ideally ये हाई के ऊपर क्लोज नहीं करता है, देन हमारी जो व्यू रहेगी, क्योंकि मैंने क्या बोला था, थर्ड मंडे से मार्केट में फॉल होता है, एंड लास्ट मंडे वाज द थर्ड मंडे, राइट? एंड थर्ड मंडे में अगर हमें रेड कैंडल मिल जाता है, स्पेशली इन बैंक निफ्टी, निफ्टी में तो नहीं मिला, स्पेशली इन बैंक निफ्टी, वी आर गोइंग टू डू ए सेल. और 38,300 का ही सेल था हमारा, and we are very, very sure almost market will close below that. We had a do and die level of 38,300. The only problem that happened, which actually helped us in making the decision to make a straddle for Nifty, is Bank Nifty is this move. ये इंट्राडे में नीचे आ गया था, बट तब तक हमारी पोजीशन कट हो चुकी थी. Okay? This move was huge. This move is huge, and the way it went, I almost decided that it's not going to go down heavily anymore. This is the only move which confuses us, because of which we cut our position. Otherwise, Bank Nifty में तो we are sure कि market नीचे ही रहेगा. Nifty में, though the fall was bigger in Nifty, but Bank Nifty we are almost sure कि market नीचे ही रहेगा. I mean, below 38,300 it will expire.
And that is the biggest mistake we have done. We could have kept this actually, so we would have come out of profit in bank nifty for sure. And nifty we made this straddle because Monday was a green candle, right? And Tuesday was almost a flat opening. That is the reason. Okay, we're still, I mean, we're still okay, like up to 17,000, 18,000 gas pass. If market would have been close between 18,000 or above 18,000, we would have made profit for sure. The problem was this Thursday ka red candle. Okay, it should not have happened. But anyway, kabhi kabhi ho jata hai. One of the reason, I don't want to blame people, but like if you see the videos of 7 lakh, 8 lakh subscriber guys who gives you positional views, that is one of the reason I made a loss actually. I don't want to blame people for sure, but their view was that market would trade between 18,000 to 18,500, right? And that is one of the videos I saw, and I decided that market would probably expire around 18,000. Wednesday tak theek tha, Thursday was a very very bad day, right? So stop watching people's video. I mean, watch it, but if you have a setup, you have own understanding of your own price action, then don't bet on other people's money, right? Same thing with me. I say something, but if you have my style of trading, then only you would be able to make profit. Because if you see, by the end of the week I came out of profit. I don't know how many people actually went into loss. So if you think my style and your style trading style is matching, no, the mentality will match. Because Friday we went entirely option buying. We didn't do option selling, because option buying we can capture more points with limited capital. I mean less capital. So I straight went for option buying. I played only for my forte area, which is bank nifty, right? And we captured everything. I captured this fall in the morning. I captured this double bottom buying, not entirely 100%, but 50-60% here. And then I took this fall. And then this one I didn't trade, of course, this fall and this buy. But this fall, this buy, and this fall, these three, we had a level here. These three trades itself gave me the money, which was actually covered the Thursday loss of Nifty itself. Right? Anyway, so if you think that my style of trading and your style of trading is matching, then only play with my views and put big bets. Otherwise, watch for some time before you come into that kind of psychology. Anyway, gyan ho gaya. But this gyan was required. People who asked me that why videos didn't came on Wednesday and Thursday. So it is a very simple rest that I have taken. Now next week का view में आ जाते. Anyway, weekly review तो हो ही गया. Next week का view जो है, the way the price action has been formed. Okay, let's start with the weekly view. Okay, the way this price action has formed. Okay, right. You could probably see just simple candlestick pattern में अगर हम चलते हैं, right. So if you go like this, it's every alternate week, Nifty was actually falling and rising. And this candle itself was a clear sign that market at least will go up to 3 candles here. This fourth candle was a surprise from a weekly point of view. Now on this weekly analysis, if you look at after 4, okay, how many candles you would be expecting ideally? How many candles? Ideally 1, and then I would be expecting ideally 2. 2 candles in Nifty, red candles, weekly I'm talking about, right? This is a wonderful bearish engulfing candle. Okay, this is a wonderful bearish engulfing candle. Okay, right. What base could happen if you look at this? 17,800 to 900 would have been, actually I'll go for 800, this black level. 17,820 would be our upper side capping ideally, just from the candlestick pattern of weekly candles. Okay, 17,820 would be our upper side capping in Nifty. Lower side, at least the target should be 17,300 minimum. Okay, and it can come up to 17,000 and then go up and close around 17,200, which is fine. But on a downside, 17,300 at least should be the target. I think market will still be sell on rise on next week. Okay, weekly view mein.
Let us do a very, very simple analysis. Now let's go to a daily chart, right? Okay. In a daily chart, we had 3 candles. It is forming on a reasonably top, right? A reasonable top, right? The highest is this, no? 18,600. This was formed around 18,400. Only 200 point gap, right? Reasonably top. The moment on a reasonably top, you see this is a very simple concept of candlestick, 3 black crows, right? 3 black crows is a bearish sign, even in Delhi. So weekly is bearish. Okay, here we have a doji candle, of course. That means even if market goes up, we will sell. We will do a sell or rise. That means weekly is bearish. Okay, daily is bearish. There is no reason we should be ultra bull in market. Short covering हो सकता है. देखो, market is supreme. I mean, it can negate my entire view and just go for a ultra short covering and go up to all time high. That is possible, but market will show us that. Market will show us that. I'll tell you how to basically go ahead and see that where a short covering might happen ideally, right? But if you look at from a simple candlestick pattern, weekly is bearish, daily is bearish, है ना? Daily is bearish है, तो हमें मार्केट में व्यू जो होता है वो सेल ऑन राइज का ही होना चाहिए मार्केट में ideally. I'll give you one more reason. If you look at बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं, वीकली से चालू करते हैं. बैंक निफ्टी स्टिल लुकिंग स्ट्रॉन्गर ऑफ कोर्स कंपेयर्ड टू निफ्टी. वीकली में if you see, this is also bearish engulfing candle weekly में, right? Correct. And it is also forming on a reasonably top, almost double top बना गया है, reasonably top. Okay, I will not say that very high top, but reasonably top, right? Correct. This is happening after forming the 5th wave. This is the first wave. The second wave would be ideally, if we consider like that, right? The second wave would be ideally 50% of this minimum we are talking about. So that would be ideally this level, 36,570. At least 1,000 point का fall तो और बाकी बैंक निफ्टी में it can even go below that. Even can go below that. निफ्टी में जितनी बड़ी फॉल हुई है बैंक निफ्टी में अभी तक हुई नहीं. बैंक निफ्टी में I still personally think market would still go for a little bit downside more before making any upside move, or before even being range bound. Okay, so this is our weekly is bearish definitely. If you look at daily, okay, on a daily chart, do you think a bearish candle? This is on the top, again same pattern, red, 3 black crows again. We should say it as red crows rather than the black crows. thin red candle, 1 2 3. This is a pause candle, doji, a little bit bullish, but I will not consider this candle as bullish. Okay, little bit bullish. Now what market should behave in both Nifty and Bank Nifty? A super confident trade for us would have been for a sell and rise के लिए, अगर मार्केट मंडे गैप अप करता है थोड़ा ऊपर जाके मार्केट नीचे आता, देन मंडे ट्यूसडे अपन कंटिन्यू कर लेते सेल ऑन राइज, एटलीस्ट सी सेल कर सकते इजीली. ओके, राइट. ए कॉन्फिडेंट ट्रेड वुड बी मंडे मार्केट गैप अप करे और ऊपर से गिरे, टॉप से गिरे. ओके, यहां तक गिरे, ऐसा. आई विल गिव यू द लेवल व्हिच वी नीड टू लुक एट. अगर ये हो जाता है, which looks very very rare, क्योंकि मार्केट मेरे को गैप डाउन दिख रहा है, looking at the global market गैप डाउन, तो क्योंकि the confident trade for me would have been market में Monday a green doji and Tuesday the red candles would have been following, I could have easily gone for sell. That would have been my 100% confident trade in both the index with the view of sell on rise. But अगर होता है, ये याद रखना, अगर होता है, कंडीशन क्या है, मंडे मारूबुजू ग्रीन कैंडल नहीं बनना चाहिए. अपर साइड अगर कैंडल बनता है, मारूबुजू ग्रीन कैंडल अगर बनता है तो ट्यूसडे गैप अप होगा, ट्यूसडे से इट माइट फॉल. देखो व्यू तो सेल ऑन राइज का ही है वीकली का, अब किस लेवल से सेल आएगा दैट डिपेंड्स अपॉन द मंडे कैंडल. मंडे अगर मारूबुजू कैंडल बनता है, ट्यूसडे गैप अप होकर मार्केट फॉल करेगा एंड इट विल कंटिन्यू द फॉल.
इफ मार्केट में मंडे अपर साइड मार्केट रहता है एंड डोजी कैंडल बनाता है, ठीक है, देन देयर इज हाई पॉसिबिलिटी के ट्यूसडे मार्केट गैप अप ही ना हो, गैप डाउन करके ही कंटिन्यू करें। ओके, दीज आर आवर कॉन्फिडेंट ट्रेड्स, राइट। अगर ये सिनारियो बनता है, अगर ये सिनारियो नहीं बनता है एंड मार्केट बेसिकली स्टार्ट समवेयर गैप डाउन हियर, then we need to see that what kind of market movement market is making. Okay, again the candle would be important, whether it is red or it is green. Okay, if it is green, it will be a gap up on Tuesday again and fall might start, which is the scenario on the upper side. But if it is a red, there is no guarantee that market will gap up. Market can continue the trend too. That means अगर ये मैं सारे सिनारियो जस्ट कैंडलस्टिक पैटर्न पे ले लूं प्राइस एक्शन के हिसाब से, मुझे मार्केट सेल ऑन राइज ही दिख रहा है। ओके, एंड देयर इज स्पेशली बैंक निफ्टी में अभी भी स्पेस है। निफ्टी में शायद लोग सोच रहे होंगे स्पेस नहीं है, बट आई थिंक स्पेस है। मैं बताता हूँ व्हाट आर द स्पेस आर देयर, बट बैंक निफ्टी में आई थिंक स्पेस स्टिल है सेल ऑन राइज के लिए, और बहुत अच्छा स्पेस है। अगर हम फिबो की एक लेवल लेंगे, ये जो हमने एक चार्ट ड्रॉ किया था, जिस चैनल को बैंक निफ्टी ने तोड़ा था, मैंने बोला था जिस तरह से ऊपर गया रिटेस्ट के लिए एक बार आएगा, बट रिटेस्ट अभी देखते बहुत टाइम है, पूरा रिटेस्ट नहीं होगा। बट व्हाट वी कैन टारगेट इज आइडियली a level around this 36,500 एंड फिबो का लेवल बता रहा हूँ 36,000 के आसपास। सो 36,000 के आसपास का एक टारगेट तो अपन लेके जा ही सकते हैं आइडियली। 61% का एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस स्विंग हाई स्विंग लो इज नॉट बैड। ओके, फ्रॉम वेयर वी हैव टेकन, आई हैव टेकन फ्रॉम हियर। ओके, सो 61% की एक्सपेक्टेशन कोई बुरी बात नहीं है। दैट मीन्स आई एम टॉकिंग है 1500 पॉइंट का फॉल बिफोर वी थिंक ऑफ बाइंग। सो दैट मीन्स मार्केट जब तक 36,000 तक नहीं आ जाता, एक पोजिशनल बाइंग का मतलब नहीं बनता है। आई एम टॉकिंग अबाउट पोजिशनल बाइंग। ओके, पोजिशनल बाइंग का मतलब नहीं बनता है, और पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट यहाँ तक भी आ जाए 78 पॉइंट। जनरली मार्केट बीच में से घूम जाता है। ये एक मेरा अल्ट्रा लेवल है जो फॉर इवन नेक्स्ट मंथ भी काम करेगा, ये विच इज 35,480। मार्केट अगर 35,480 के आसपास आ जाता है नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, वॉट एवर लेवल इट, मार्केट विल गिव यू 1,000 to 1,500 पॉइंट्स अपसाइड फॉर श्योर फ्रॉम दिस लेवल। सो ये लेवल को आप ड्रॉ करके रख सकते हो फॉर नेक्स्ट 2-3 कमिंग वीक्स, 35,480 का लेवल। ओके, 35,480, that means we are talking about a 2,000 point का fall in bank nifty. Let's see whether it happens or not. But अगर हम अपना टारगेट ले, वीकली टारगेट अगर ले, तो एक 36,500 के आसपास का एक टारगेट और 36,000 के आसपास का एक टारगेट हम इजीली ले सकते हैं। ओके, ये दोनों लेवल हाई लेवल पे याद रखना है, राउंड लेवल से 36,500 एंड 36,000। अगर वीकली वीडियो की आप मेरी बात करोगे, तो मेरी जो डू और डाई लेवल है बैंक निफ्टी में, वो यहाँ पे है 38,000 पे है। फर्स्ट जो मेरी रेजिस्टेंस आ रही है वो आ रही है 38,529। अब ये लेवल 547, 38,547 ये लेवल ड्रॉ करो, और 39,221। आई डोंट थिंक मार्केट यहाँ तक जाएगा। हमारी अपर साइड की कपिंग 38,550 की होनी चाहिए, 38,550 की होनी चाहिए। और मार्केट सिंस दिस इज आवर डू और डाई लेवल, आपको सिर्फ यही लेवल को मॉनिटर करना है कि व्हेन मार्केट इज क्रॉसिंग दिस लेवल। The moment market is crossing this level and sustaining for like 2-3 hours, or I would prefer a day closing, then only you need to cut your C selling positions. Otherwise, I'll be still comfortable in doing C selling. Okay, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ। निफ्टी में दिस वीक आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेड एनीथिंग। Okay, so we would still basically do a C selling, but the moment this do die level is cut, 38,000 का मोटा मोटा level is cut, then make sure that we basically cut our losses and ideally re-enter around 38,500 के आसपास, 600 के आसपास. So this would be my upper side capping 30, because resistances are huge when market is going up now. In bank nifty the resistances are huge, so even if we got 2 resistances, no, your 2 days are gone, right? Till Wednesday morning it is gone, तो आपको डीके मिल जाएगा आराम से. So that is why 38,500 जो है
547 ये जो लेवल है, ये लेवल मेरी अपर साइड कैपिंग है। डाउन साइड में मेरा कोई लिमिट नहीं है। डाउन साइड में माय लिमिट वुड बी 35,500। ओके, हाउएवर फ्रॉम ए टारगेट पॉइंट ऑफ व्यू, जो बेसिकली पिरामिडिंग करके लेना चाहते हैं, वो 36,500 एक लेवल है। देखो मोटा मोटा लेवल तो मैंने आपको दिया है टारगेट का, जो मार्केट की वो मोटा मोटा लेवल ध्यान में रखना है। ओके, ध्यान में रखना है, दोज आर नॉट लाइक एग्जैक्ट लेवल्स। सो एग्जैक्ट लेवल्स अगर मैं लूं तो 36,000, ये देखो 36,699, सो 36,700 जो राउंड लेवल है, 36,700 का जो राउंड लेवल है, दिस इज अ रिवर्सल लेवल फॉर मी। These are all reversal levels. 35,950 is a reversal level में, ये भी नोट करके आप रखो, and 35,500 is a 490 is a reversal level में। ये जो तीन रेड लेवल मैंने दिए ना यहाँ पे, these are all reversal. Market might fall, but at least intraday में आपको यहाँ पे buying market दे देगा। अब minimum 200 to 300 पॉइंट्स की बाइंग आपको मार्केट इजीली देगा फ्रॉम दिस लेवल्स। तो ये लेवल वीकली के लिए आप ड्रॉ करके रखो, बट इंट्राडे में आप बाय ले सकते हो मिनिमम 200 पॉइंट्स का फ्रॉम दिस लेवल्स व्हेनेवर मार्केट रीचेस हियर। ओके, बिग बाइंग नहीं है, बट स्कैल्पिंग बाय 200 पॉइंट की तो अपन इजीली कर सकते हैं। 36,700, 35,950, 35,490, दिस थ्री लेवल्स। ओके, बाकी डाउनसाइड का टारगेट तो मैंने दे दिया है। टारगेट 1 हमारा 36,000 होना चाहिए, 500 होना चाहिए। टारगेट 2 होना चाहिए 36,000। ओके, और टारगेट 3 होना चाहिए 35,500। 500 का रेंज है आइडियली, 36,500, 36,000, 35,500। ठीक है, 500 पॉइंट का गैप है ऑन ए हाई लेवल। ओके, मोटा मोटा, बट एक्चुअल लेवल्स आर दिस। ओके, राइट, दीज आर द थ्री टारगेट्स। डाउन साइड में मेरा कोई लिमिटेशन नहीं है, इट कैन गो एनीवेयर। I would only be considering this do and die level. If market is sustaining, then I will think of upper side capping मेरा यही है 38,550। निफ्टी में करते हैं। निफ्टी में क्या है, देखो निफ्टी ये जो है, इसमें फीवो लगाया नहीं था मैंने एक्चुअली, बट निफ्टी में भी अगर मैं देखूं, या ये देखो 61.8 यहाँ पे मैच हो रहा है आइडियली, राइट। 71 पॉइंट और नीचे आ रहा है, राइट, बट हम 61 तक तो ले सकते हैं। देखो 60, ये जो पॉइंट है ये मिनिमम, ठीक है, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज आइडियली हियर 17,165। ओके, ये याद रखते हैं। तो जो हमारा बीच का लेवल है, निफ्टी तो बहुत क्लियर है अपने 61.8.5 विच इज 17,400 का लेवल है, एंड देन द नेक्स्ट लेवल वुड बी अराउंड दिस 17,150। ये लेवल जो है, यहाँ पे जो बाइंग जोन मैंने बनाई है 115। ओके, या 115, दिस वन 17,100 to 115 का जो लेवल है, दैट वुड बी आवर टारगेट टू मार्केट। मार्केट अगर 17,100 के आसपास आपको कभी मार्केट मिल जाता है, तो देयर इज अ वेरी वेरी हाई चांसेस दैट मार्केट विल गिव यू 200 पॉइंट्स का बाइंग। ओके, अप टू दिस 300 पॉइंट्स की बाइंग। ओके, अप टू 400 तक एक मार्केट एक बाइंग आपको दे सकता है। तो ये बाइंग आपको मिस नहीं करना है आइडियली, ठीक है। तो 17,100 पहले आने तो दो, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 500 पॉइंट का फॉल। ओके, बट बैंक निफ्टी में मैंने जब बोला था कि 1000 पॉइंट की मूवमेंट मार्केट मिनिमम देगा, 17,100 का जो जो लेवल है मार्केट, वहां से आपको मिनिमम 300 to 400 पॉइंट की बाइंग दे सकता है। 300 तो मिनिमम आपको लेना है, 300 पॉइंट का 17,400 तक की बाइंग आप इजीली मार्केट में ले सकते हो पोजिशनल, ठीक है। मार्केट में सिनारियो वही रहेगा। मंडे इट डिपेंड्स वेदर इट्स ए मारुबुजु कैंडल, इट्स ए डोजी कैंडल, what is the color of the candle, and based on that from Tuesday it could be a sell on rise again on the upper side. On the downside it is a little bit confusing when scenario upper side downside का same ही है candle color का। okay, the only difference is if Monday market makes a red candle। okay, if Monday markets makes a red candle and a big red candle, then the actual confusion will start। then तो हम positional कुछ खेल ही नहीं रहे। let's wait for Tuesday intraday, and Tuesday intraday के बाद market अगर ये level पे आता है then we'll go for buying।
That means Wednesday, Thursday, we can see buying if market reaches these levels. Otherwise, not. Otherwise, the rest of the scenarios, the same market view is clear. Okay, Monday, dozy green or a Marubuju green, we might see a gap up on Tuesday, and then market would start selling, irrespective of in which side this price action is happening. Clear, everybody? राइट मार्केट में जो अपर साइड की कैपिंग होनी चाहिए मार्केट में, निफ्टी में मेरे हिसाब से, क्योंकि निफ्टी इज एक्चुअली मूविंग वेरी वेरी वायलेंटली, मेरा मेरा तो पर्सनल चॉइस होगा कि मार्केट जो है ये इसी रेंज पे कहीं पे कैप हो जाए, लाइक 17,900 के आसपास, बट 18,000 भी एक्चुअली लेवल यहाँ पे 17,985 which is 18,000, but my personal choice would be 17,900 के नीचे मार्केट कैप हो जाए. So I, rather than going for a 17,000 18,000 का लेवल, I would personally basically go ahead and see a level capping this week around 17,900, but there is no guarantee. But however, this level might be a very good capping level around 18,000, mota round level. Okay, right? But ठीक है, 17,900 के ऊपर सस्टेन करने दो, फिर देखते हैं अगर जाता है तो 17,900 would be our weekly level. 17,000 18,151 is actually our the other level, right? And on the downside, the targets are 17,276 and this one. Actually यहाँ पे है, but this is a reversal level, तो शायद यहाँ तक market आएगा नहीं. तो 17,100, 17,100, 17,300. This would be our target. That means we're talking about another 500 point fall, max to max. May happen, may not happen. If it happens, we'll go for a buy. Okay, 17,100 से we'll go for a buy if we get it. ठीक है, clear everybody, right? So निफ्टी में ऐसे भी मैं तो ट्रेड करने वाला नहीं हूँ, so I'm not paying a lot of attention into निफ्टी. But फिर मंडे की अगर हम ट्रेडिंग एक बार कर लेते हैं, so that people know, इंट्राडे तो कर ही सकते हैं, because we have been doing fantastic in intraday. Positional में we just got into loss, right? Otherwise intraday has been fantastic, right? So देखो मेरा जो वीकली जो सेल जोन है ना निफ्टी में, अगर देखोगे जो वीकली सेल जोन है मेरी निफ्टी में, दैट वीकली सेल जोन इज दिस, जो मैंने ड्रॉ किया आपको बताया अभी 17,900 का लेवल टॉप पे, और वीकली बाई जोन जो है अगर देखोगे वो 17,100 है, तो 800 पॉइंट का रेंज है. इट्स अ ह्यूज रेंज. ओके, आई डोंट नो हाउ विल प्ले, सो दिस इज अ ह्यूज रेंज एक्चुअली. बट इंट्राडे की अगर हम बात करें, इंट्राडे में मंडे की ट्रेडिंग कर लेते हैं पहले फटाफट. मार्केट अगर ऊपर साइड ओपन होता है तो 17,810 अगर मार्केट पहुंचता है, विच इज लाइक 200 पॉइंट्स फ्रॉम द टुडेज क्लोजिंग, फ्राइडेज क्लोजिंग. यहाँ पे आपको ब्लाइंड सेल मारनी है 17,810 पे. आप सेल यहाँ से भी मार सकते हो 17,790, 10 पॉइंट का डिफरेंस है, सॉरी 30 पॉइंट का डिफरेंस है, बट योर स्टॉप लॉस वुड बी दिस. ओके, सो 18,000 मोटा मोटा ले लो, 17,800 मोटा मोटा ले लो. सो 17,800 से अराउंड दैट लेवल आप एक सेल मार सकते हो. मार्केट मिनिमम आपको 100 पॉइंट दे जाएगा, और किस्मत अच्छी है तो 150 पॉइंट्स दे जाएगा. ये लेवल तो आपकी आ जानी चाहिए. ठीक है, नाउ मार्केट अगर इस लेवल के नीचे कहीं भी ओपन करता है, इस लेवल के नीचे कहीं पे भी ओपन करता है, then I would be comfortable selling from this level 17,600 with a stop loss of 50 points. 17,600 से भी I will try to make a sell. पहला टारगेट डेज लो डबल बॉटम बना सकता है, which is 17,500. टारगेट 2 would be 17,400. 100 and 100 पॉइंट्स का है, 200 पॉइंट्स की फॉल पॉसिबिलिटीज है. अगर मार्केट यहाँ पे है, आई वुड गो फुल. मार्केट में देखो कल तो सेल ऑन राइज ही है, तो बाय कब करोगे? मार्केट में हर लेवल सेल ऑन राइज है. मार्केट ऊपर ओपन हुआ, यहाँ से सेल करना है. मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, 17,600 से सेल करना है. टारगेट हमारी यहाँ तक है, सेकंड टारगेट. बाइंग हमें सिर्फ इंट्राडे में बाइंग आपको 17,300 के आसपास करनी है विद 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस. मार्केट बाय चांस इसके नीचे अगर चला भी गया ना, इट विल कम बैक. सो ये लेवल 90% सेफ हो जाता है फॉर बाइंग, तो यू कैन डू ए बाइंग. दिस इज लाइक इंट्राडे. ओके, मंडे में. अदरवाइज मार्केट इज सेल ऑन राइज मेरे हिसाब से. ठीक है,
पॉसिबिलिटीज, एक पॉसिबिलिटीज ये है कि अगर मार्केट मंडे गैप अप ओपन होता है, इवन इफ इट डज ए सेल ऑन राइज, इट एक्चुअली रिकवर्स एंड मेक्स ए डोजी ग्रीन, जो सिनेरियो में बता रहा था, इन दैट केस विल यूज फॉर ट्यूसडे ओपनिंग। ट्यूसडे मार्केट गैप अप हो सकता है एंड देन फॉल हो सकता है, ठीक है। मंडे बैंक निफ्टी अगर हम ट्रेडिंग करें, जहाँ पे वी आर गोइंग टू पे लॉट ऑफ अटेंशन टुमारो आल्सो, सो बैंक निफ्टी की जो हमारी ट्रेडिंग रहेगी, हमारी जो डू एंड डाई वीकली लेवल का है वो तो इधर ही है, सबको पता है 38,020 का लेवल है। टुमारो सेल जोन की ट्रेडिंग सबको पता है करना कैसा है, राइट। सो ये जो लेवल है ये बहुत क्रूशियल हो जाता है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी अगर मार्केट ऊपर ओपन हुआ, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लिया, देन हाई चांसेस के 38,500 आए बाय ट्यूसडे, नॉट इवन इफ नॉट मंडे, बाय ट्यूसडे। ओके, तो ये सिनारियो एक है हमारा। लेवल आपको यहाँ पे देखना है, लेवल इज 37,865, ये लेवल पे। ओके, मार्केट अगर लेट से सेल जोन पे ही डायरेक्ट ओपन होता है और फॉल होना चालू हो जाता है, फर्स्ट 10 मिनट्स ये सस्टेन कर जाता है, देयर आर वेरी वेरी हाई चांस दैट मार्केट वुड कम बैक टू द डेज लो, वेरी वेरी हाई चांस 37,300। उसके बाद रिकवर करेगा, इट डजंट मैटर, बट दिस इज इन द फर्स्ट 10 मिनट सिनेरियो आइडियली। ओके, you will make a sale and the stop loss would be this सेल जोन का टॉप 37,920। ओके, मार्केट अगर गैप डाउन हो जाता है, जो बहुत हाई चांसेस है, मार्केट अगर गैप डाउन हो जाता है तो बाइंग हमारी इंट्राडे की है यहाँ पे अप टू दिस लेवल। ओके, बाइंग हमारी कहाँ पे बनेगी, बाइंग हमारी बनेगी 36,770 के आसपास। ओके, 36,770, उससे पहले नहीं। सो दैट मीन्स ये एरिया देखो, प्राइस एक्शन में भी अब अगर आप देखोगे ट्रेड कैसे होगा, मार्केट अगर गैप डाउन हो जाता है तो ट्रेंड तो विल कंटिन्यू बिकॉज इट इज ओपनिंग ऑन डेज लो, तो इस रीजन में बाइंग का मतलब बनता ही नहीं। मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, आई डोंट नो, बट वो डे हाई काटेगा तो हम बाई करेंगे, सिंपल है, अदरवाइज बाई नहीं बनता। अदरवाइज आपकी एक बाइंग रिवर्सल बाइंग जो बनती है, और रिवर्सल बाइंग यहाँ पे बनती है 36,700 में 300 to 400 पॉइंट्स इजिली बाइंग मिलेगा आपको, इजिली। ओके, यहाँ पे आता है तो। अदरवाइज सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है कि मार्केट यहाँ बीच में कहीं पे ओपन हो गया, यहाँ पे कंफ्यूज हो गया, कोई बाइंग नहीं करनी है अपने को, वेट करना है कि डे लो कब कट होगा। डे लो कट हुआ 300 पॉइंट की तो सेल ले ही लेनी है, 36,900 तक की सेल ले लेनी है अपने को फ्रॉम दिस लेवल, है ना। 36,300 से 900, 400 पॉइंट की सेल है ये तो इजीली मिलेगा ये ब्लैक लेवल तक। उसके नीचे आ गया तो और बहुत बोनस है, ठीक है। तो मुझे बाय का कुछ दिखता नहीं है, कल कुछ भी बाय का नहीं दिखता, सिर्फ ये एक्सट्रीम सिनेरियोज में बाई है, सेल जोन के ऊपर गैप अप किया या फिर सीधा यहाँ पे बाई किया, अदरवाइज मैं मार्केट में सेल ऑन राइज ही रहूंगा। और नेक्स्ट वीक भी मैं सेल ऑन राइज हूँ, मोर देन निफ्टी। आई वुड बी मोर कंफर्टेबल इन बीइंग सेल ऑन राइज ऑन बैंक निफ्टी, ठीक है। ये वीडियो कितना लंबा हुआ आई डोंट नो, देख लेना। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।